Hello friends, beginning with the next chapter that is matrices. Before that, don't forget to like, share and subscribe to my channel. So the next chapter is matrices. ये चैप्टर शुरू करने से पहले आई वुड रिकमेंड यू टू गो बैक टू 11th स्टैंडर्ड एंड रिवाइज द मैट्रिसेस. ओके, बिकॉज अगर हम 12th स्टैंडर्ड के मैट्रिसेस पे जंप मारेंगे देन इट विल गोना बी फ्लॉप शो. ओके, सो जस्ट रिवाइज द 11th स्टैंडर्ड मैट्रिसेस. Revise all the types of the matrices. We have 14 types of the matrices which we have studied in the previous class. This I have written here 14 types. So row, column, square, rectangular, diagonal, scalar, unit or identity, null, transpose, singular. Singular is when determinant of A is equals to 0. Non-singular when determinant of A is not equal to 0. Symmetric, skew-symmetric, upper or lower triangular matrix. So we have these 14 matrices. We are going to use everything. We are going to use all the types, but maximum हम इस चैप्टर में यूज करने वाले सिंगुलर, नॉन सिंगुलर, नल मैट्रिक्स, आइडेंटिटी मैट्रिक्स. ये ज्यादातर इस चैप्टर में यूज होने वाला है. ओके, सो आई वुड recommend you to go back to 11th standard textbook and revise all these types and their properties. So begin with the chapter of the matrices. How we denote the matrices? We denote matrices by the square bracket. इस तरह से denote करते हैं matrices को. Okay, we will take one matrix here. All inside the matrix is elements. इन मैट्रिक्स के अंदर जो भी है उसे हम एलिमेंट्स कहते हैं. एंड व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स? 2 into 2. We can see the 2 rows and 2 columns. This is the number of rows and this is the number of columns. Okay, how we denote the elements? A11, that means there one denotes the first row and the first column. First row, second column. Second row, first column. Second row and second column. This is how we denote the matrix. We should remember some rules of the matrices. अगर हमें एडिशन करना है, सब्ट्रैक्शन करना है या फिर इक्वालिटी निकालना है मैट्रिक्स का, देन ऑर्डर सेम होना चाहिए दो मैट्रिक्स का. अगर दो मैट्रिक्स का हमें एडिशन करना है तो दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम होना चाहिए. दैट मीन्स अगर 2 into 2 है तो अगर फर्स्ट मैट्रिक्स का ऑर्डर 2 into 2 है तो सेकेंड मैट्रिक्स का भी ऑर्डर 2 into 2 ही होना चाहिए. अदरवाइज एडिशन, सब्ट्रैक्शन और इक्वालिटी इज नॉट पॉसिबल. ओके, वी विल टेक एग्जांपल हियर. We are going to do the addition of two matrices. So here we have the order 3 into 2 and here also we have the order 3 into 2. Okay, 3 rows and 2 columns. Okay, we can see the 3 rows and 2 columns. Now we are going to do the addition of these matrices. 4 plus 3, 7. 3 plus 2, 5. 2 plus 0,
2. 1 plus minus 1 is 0. 6 minus 4 2. 5 minus 6 minus 1. So this is our answer. This is our final answer. Similarly, अगर हम subtraction करेंगे, then first element इस मैट्रिक्स का और first element इस मैट्रिक्स का, ऐसे करके हम subtraction भी कर सकते हैं. Then what about equality? एडिशन के लिए, सब्सट्रैक्शन के लिए और इक्वालिटी के लिए हमें ऑर्डर सेम होना चाहिए. दिस इज द रूल. ओके, we have checked it for addition. Now for subtraction, this is the first example, this is the second. यहाँ पे सब्सट्रैक्शन दिया है. Okay, we have given the answer here for A और B. A एलिमेंट्स हमें फाइंड करना है. ओके, वी हैव टू फाइंड द A एंड B. सब्सट्रैक्ट करके निकालते हैं हम लोग. A minus 2, 3 minus 4 is minus 1. B minus of minus 6, that is plus 6. B plus 6 minus 2 minus 1, that is minus 3. Okay, ये दो एलिमेंट सेम है. Okay, then what we are going to do, this is equals to 4 6 minus 1 minus 3. A minus 2 is equal to 4 and B plus 6 is equal to 6. A is equals to 4 plus 2, that is A is equal to 6. This is A and दोनों जगह 6 कैंसिल हो जाएगा. या फिर 6 अगर यहाँ आ गया, then it will be 0. B is 0. Okay, these are the values of A and B. Okay, I hope you understood that what are the rules of the matrices for addition, subtraction and equality. Just go through this. Now we are going to see the multiplication and division and square of the matrix. हमें एडिशन, सब्सट्रैक्शन और इक्वालिटी के लिए ऑर्डर सेम होना, दैट वाज द रूल. ओके, बट मल्टीप्लिकेशन में जरूरी नहीं कि ऑर्डर सेम होना चाहिए. अगर ऑर्डर सेम नहीं होता है तो भी मल्टीप्लिकेशन इज पॉसिबल. लेट्स टेक इट. इसका ऑर्डर क्या है? 3 into 2.
Okay, this matrix is multiplied with what is order of this matrix 2 into 3. इसमें रूल क्या है, this and this has to be the same. Okay, this and this has to be the same. और जो आंसर होगा that will be multiplication of this and this, 3 into 3. That means we are getting 9 elements in the final answer. Okay, so let's do the multiplication here. First row multiplied with first column. Okay, first row first column, 4 into 2 that is 8 plus 2 into 4 that is also 8. First row second column, 24 plus 4. First row third column, minus 4 plus 14. Now second row first column, minus 6 plus 4 minus 18 plus 2. 3 plus 7. Third row first column, 0 plus 24, 0 third row second column, 0 plus 12. Third row third column, anything multiplied by 0 is 0, 0 plus 42. Okay, we will add this. 8 plus 8 is 16, 28, 10, minus 2, minus 16, 10, 24, 12 and 42. This is our final answer. यहाँ हमें ऑर्डर सेम रहने की जरूरत पड़ी है क्या? नहीं. So what is the main rule here? This has to be the same. Number of columns of the first matrix and number of rows of the second matrix has to be the same, or number of rows of the first matrix and number of columns of the second matrix, if we multiply this, then this is going to be your answer. Okay, I hope you understood this. Now division of the matrix is inverse of the matrix is substitute of division of the matrix. मैट्रिक्स में डिवीजन एक कॉन्सेप्ट नहीं होता है, इनवर्स इज इट्स सब्स्टिट्यूट. दिस इज व्हाट इज बिगिनिंग ऑफ 12th स्टैंडर्ड matrices. Okay, we will begin with that in the next video. So I hope you like this video. If you like it, then please do like, share and subscribe to my channel. Thanks for watching.